गुलबर्गा शहर का केबन टर्फ ग्राउंड में हर साल केबन प्रीमियर लीग खिलाया जाता है। इस बार केबन टर्फ ग्राउंड में डे एंड नाइट क्रिकेट मैचेस खिलाने के लिए फ्लड लाइट्स लगाए गए हैं। केबन टर्फ ग्राउंड पूरे कर्नाटक में चौथे नंबर पर आता है और 3 ग्राउंड बैंगलोर, मैसूर और हुबली में हैं, जो KSCA यानी कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर आते हैं। और प्राइवेट क्रिकेट ग्राउंड में फ्लड लाइट्स इंस्टॉल होने वाला केबन टर्फ ग्राउंड पहला क्रिकेट ग्राउंड है जहां पर इंटरनेशनल फॉर्मेट्स मैचेस खिलाए जाते हैं। डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब सज्जद-ए-नशीन दरगाह हजरत ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फ्लड लाइट के इनॉग्रेशन के मौके पर अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि गुलबर्गा शहर से भी क्रिकेट की दुनिया में यहाँ के प्लेयर नाम रोशन करेंगे, इसलिए केबन टर्फ ग्राउंड में क्रिकेट के लिए सभी फैसिलिटीज दी जा रही है। इसका इनॉग्रेशन हुआ है हजरत डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब सज्जद-ए-नशीन दरगाह हजरत ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह एंड चांसलर ऑफ ख्वाजा बंदे नवाज यूनिवर्सिटी सैयद मोहम्मद सैयद अल हुसैनी साहब, श्री पूज्य चिरंजीवी डोडप्पा अप्पा महर्षि 9th पीताधिपति शरण बसवेश्वरा संस्थाना, मोहम्मद अजहरुद्दीन फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन एंड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ख्वाजा बंदे नवाज यूनिवर्सिटी, श्री शरण बसप्पा दशनापुर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, मैडम कनिस फातिमा नॉर्थ MLA एंड चेयरमैन ऑफ सिल्क इंडस्ट्रीज कर्नाटका और साउथ MLA श्री अल्लम प्रभु पाटिल के हाथों। And I must congratulate all the organizers of this floodlight who have arranged and have made it possible for us to start it. And I am very happy that we will be probably the first in North Karnataka, if I am correct, to have the floodlight. At the same time right now, I would first like to thank you and show my gratitude from the bottom of my heart to Kanis Fatima Sawa, who was in Bangalore last evening, and on my request she changed all her programs and came here to oblige us. I am very thankful to you, ma'am. Next, Mohammad Azharuddin Sahab, whom you all know, it's same with him. He was also not possible for him to come here, but on my personal request, he has joined us today. Sir, I'm thankful to you too. Janab Saradji Sahab, in spite of his illnesses and difficulties in mobility, he has joined us to be with us in the celebration. I am also grateful to Dashnapura Sahab and Alam Prabhu Sahab and all the guests who are here, whom I am grateful to, और सबका मैं शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि they have made and will make this whole tournament a success. And I am again and also thankful to all the Pujya Dodappa Appa Sahab who has joined us also here with us, and he is with us and I am grateful to him. And the senior Pujya Sahab को मेरी तरफ से बहुत सलाम और मुबारकबादी पेश करता हूँ. I wish you would come here. One more thing I would not like to mention, that I am missing Janab Mallikarjun Kharge Sahab here today. Because that's why he was very busy, he couldn't come here, and that's the reason why I framed the invitation card by saying I think I would like to welcome Dr. Mallikarjun Kharge Sahab. I didn't say that he is going to be here. It meant if he were here, I would definitely have welcomed him. I am thankful to him. I ask him to pray for us. Thank you all of you all who are attending here to the function today. And I am also handicapped a bit because of my illness, and I am unable to involve myself 100% into
this tournaments. But if you all pray, all your prayers are with me, maybe I will be with you all later. Thank you very much, sir. Thank you. मैं खुसरो साहब के लिए मुबारकबाद देती हूँ। ये तमाम गुलबर्गा के लिए एक फख्र की बात है हमारे लिए, और जो यहाँ पर प्लेयर्स बैठे हैं उन लोगों के लिए मेरे गुड विशेस हैं। और इंशाल्लाह आइंदा आप लोग इसमें और ज़्यादा आप लोगों को दिलचस्पी लेकर खेलना है आप लोगों को, और मैं समझती हूँ आप लोगों को और भी इंटरेस्ट आएगा इसमें। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ यहाँ पर, और साहब का खुसूसन खुसरो साहब कुल्ला का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाकर दो बात करने का मौका दिया। शुक्रिया। And all the people on the dais, the highest amount of respect and regard. I think without their support and without their prayers, I think it would have been very, very tough. And I wish everyone who is present here the very best of luck. And the league has already started, the KPM Premier League. I think we have got two teams, yellow and green. So hopefully, both are my favorite colors. So